Welcome back, children. So today we are going to see the next part of the chapter logic families, the last part, that is the TTL logic. Now, in your textbook, there are two logic families given, TTL and CMOS. CMOS has been deleted for this year, so we will only be looking into TTL. Now, what is TTL? Like in the previous class, I told you there are various types of logic families, right? Depending on the logic levels, voltage levels. Depending on that, there are different logic families, right? So we are just going to see one of that logic family in this chapter, that is TTL. TTL stands for transistor logic. Okay. Now transistor logic ऐसा एक logic family है which has been derived because of the disadvantages of RTL and DTL. तो पहले वाले जो लॉजिक फैमिलीज थे दैट वाज आरटीएल, रेजिस्टर ट्रांजिस्टर लॉजिक. आई विल जस्ट राइट इट डाउन. So this is what I was talking about, transistor logic, TTL, right? So this because of the disadvantages of other logic families like RTL or DTL, because of the speed factor, it has low speed, poor noise margin, limited fan out. The words I'm using, fan out, noise margin, it's all the characteristic of logic family which is explained in the previous chapter. Okay, so fan out means कितने लोगों को वो खुद ड्राइव कर सकता है. It's just like fan out का मतलब बता रही हूँ, that it means just imagine a horse. वो horse कितने और लोगों को पुल कर सकता है. That is equivalent, or you can say synonym to fan out. That means एक गेट कितने और गेट्स को ड्राइव कर सकता है. That is fan out. So वो सब लिमिटेड था RTL लॉजिक फैमिली में और DTL में. That is why RTL means रेजिस्टर ट्रांजिस्टर कॉम्बिनेशन का लॉजिक फैमिली होता है. DTL मतलब डायोड ट्रांजिस्टर कॉम्बिनेशन में. But over here we are going to therefore look into TTL logic family, that is transistor logic family. Okay, so the first thing, using this logic family we can design all types of gates, right? In our syllabus we have NAND, NOR, NOT. Fine. Now while designing this, when you see the circuit diagram, I will show it to you. Okay, so this is how the TTL NAND gate looks like. Now there is one more word, if you can see one more word which I have written over here, and that is totem pole. Okay, ये दिख रहा होगा आपको, totem pole. TTL NAND gate with totem pole. Now what is totem pole? Totem pole is an arrangement of transistor, diode, transistor. ये जो मैंने जानबूझ के highlight करके रखा है, इसको बोलते हैं टोटेम पोल अरेंजमेंट. टोटेम पोल अरेंजमेंट मतलब वो आउटपुट सेक्शन में है. फर्स्ट यू लेट अस सी द सर्किट डायग्राम. ये जो पार्ट है, दिस इज द इनपुट सेक्शन. ठीक है, ये है इनपुट सेक्शन. यहाँ पे यू कैन द इनपुट्स आर गोइंग टू बी गिवन. ओके, so in this area input is going to be given. Now what is the heading? It is a NAND gate. So we are going to take a 2 input NAND gate. Therefore multiple emitter transistor is used, is seen over here. As the name suggests, this is TTL, transistor logic. Can you see transistors here? Yes, I can. This is the first transistor Q1, this is the second one Q2, this is the third one Q3, and this is the fourth one Q4. So the logic which you are going to implement is all dependent on these transistors. Working is all going to be implemented using these transistors. Okay? Now look at the first stage, input stage. हमको चाहिए NAND gate. दो inputs होते हैं NAND gate के लिए, A and B. You know the equivalent of NAND gate, you know the truth table, वो सब कर चुके हैं. NAND gate looks something like this. It is not of AND gate. There is a bubble over here, right? Not of AND gate. So it is A, B, and you get the output Y. Okay. And what is the logic equation? That is A dot B, sorry, that is dot bar. Not of AND gate is NAND gate. तो वो हमको देखना है working. ठीक है. Now
even if it is asked in the exam, what will you draw? You will draw this circuit diagram first. You will start explaining the working, that there are four. First, you give a brief introduction. 4 transistors are there. There are 3 sections. I will be telling you the 3 sections, and you directly start with the working. Okay. Now, the first section, हमको 2 चाहिए inputs. That is why there are multiple emitter transistor is used here. So this is a multiple input emitter transistor is used here because we need 2 inputs. Okay. Now, if we are talking about logic families in an IC, right? So NAND gate का IC number भी आपको याद रखना जरूरी होगा. It is 7400. Okay, 7400 is a 2 input NAND gate. I will write it over here. 7400 is the number of a 2 input NAND gate IC. Okay, so the first stage is input. 2 multiple emitter inputs are there. So NAND gate, as I said, it is not of AND gate. ठीक है? तो इधर तक ना ये जो combination है, this just works as an AND gate. इधर से आगे का जो path है, that will just act as an inverter. So not of AND gate is NAND gate. We will see the working and you will understand it that time. So like I said, this is the input section. This part, the first part, this is the input section. I divide the second part, intermediate section. This intermediate section is also known as phase splitter section. I can also write this as phase splitter section. Okay, you can just remember it as a phase splitter section. And the last section is the output section. This is the output section. Okay, so there it is divided into 3 parts. Fine. Or you can just remember it as input, intermediate and output. 3 section में divide किया है. Fine. Now this last section, output section, ये जो मैंने highlight करके रखा है box में, this has a special name. It is known as the totem pole. And what is totem pole? This arrangement of a transistor, diode and transistor, it is known as totem pole. That means ये 2 transistors Q3 और Q4 कभी साथ साथ नहीं चल सकते, वो दुश्मन है एक दूसरे के. That means when Q3 is on, Q4 will be off. When Q4 will be on, Q3 will be off. That is known as totem pole. Okay, you will understand when we will start the working now. Okay, now first condition, I will draw the truth table here somewhere. I'm taking A, B and output Y. Okay, first condition 0 0. I give both the inputs 0. I ground both the inputs and I give 0 0 to the input. Okay, once it is 0 0, obviously there will be no voltage here. Either 0 aega, there will be both the inputs are 0, right? So you get the collector voltage as 0. ये है एक emitter follower, right? तो बेस में ही 0 आया तो आउटपुट पे कुछ आएगा क्या? एमिटर पे कुछ आएगा? कुछ भी नहीं आएगा, 0. So this was in cutoff state. This transistor is off. इधर 0 आया, इसके बेस पे भी 0 आ जाएगा, इसके बेस पे भी 0 आएगा. Q4 is also off. Okay, so Q2 and Q4 are off. Fine. So Q2 and Q4 are off. ये दोनों को कैंसिल हो गया, ये भी हो गया. ओपन स्विच. Now look at this. जो आउटपुट है यहाँ पे, तो आउटपुट पूरा through the Q3. What did I say? When Q4 is switched off, Q3 will be switched on, and through the Q3 and the diode, the output will be equivalent to logic 1. तो हो गया 0 0 के लिए हमको मिला है आउटपुट 1. बराबर है NAND गेट का आउटपुट, बराबर है A into B bar. That means 0 into 0 is 0. उसका bar 1, right है? तो अपने को आंसर आ रहा है बराबर. ठीक है? So in such a way, in this way, so that means if any of the input is 0, any of the input, चाहे A 0 रहे या B 0 रहे, कोई भी input अगर 0 है, this transistor and this transistor are going to act in the cutoff region. That means it is in the off condition. It will act as an open switch, and आपको पूरा का पूरा output मिलेगा यहाँ पे. That is equivalent to logic 1. Okay. Now let us see the reverse case. That is both the inputs 1 1. तो क्या आना चाहिए? NAND के हिसाब से output क्या आना चाहिए? 1 into 1
बार, दैट इज 1 मल्टीप्लाइड बाय 1 इज 1 बार. आपको क्या आउटपुट आना चाहिए? 0. लेट अस सी. 1 into 1, that is 1. दोनों इनपुट्स को 1 दिया है. You obviously get high voltage over here. Therefore, this is emitter follower. जो इनपुट पे आएगा वैसे वैसे वो फॉलो करेगा. It will follow the input. जो इनपुट पे आया वो यहाँ पे कर दिया हाई वोल्टेज. Over here also high voltage मतलब talking about maybe 5 volts or something. ठीक है, पूरा लॉजिक इक्विवेलेंट टू लॉजिक 1. ठीक है, हाई लॉजिक किया, यहाँ पे भी हाई लॉजिक आया, यहाँ पे भी हाई लॉजिक आया. So this is turned on. It is it's saturated, so it will turn on. Again इधर emitter पे हाई लॉजिक आया, इधर भी हाई लॉजिक हाई वोल्टेज आ गया, तो ये भी स्विच ऑन हो गया. This Q4 is also on. What did I say? This is totem pole. तो Q4 on होगा तो कौन सा ट्रांजिस्टर ऑफ होगा? Q3 will be off. That means there will be no, you will not get high logic इसके across. Off मतलब it will act as an open switch. ऐसे थोड़ा सा you understand that it will act as an open switch. You will not get any voltage over here. You will not get the full voltage here. This is on, but this is off. So you will get Y is equal to 0. Okay, ऊपर का this will act as an open switch. तो ये डिस्कनेक्ट हो जाएगा. ये जो VCC का वोल्टेज है वो डिस्कनेक्ट हो जाएगा, जाने के लिए पाथ ही नहीं है उसके पास. Therefore output will be 0 and we are getting what we wanted. So this is TTL NAND gate with totem pole. अच्छा, विदाउट टोटेम पोल हम कर सकते हैं क्या? बिल्कुल. नाउ क्यों टोटेम पोल यूज किया है वो आपको समझ में आएगा. ये जो इतना भाग है ना, ये जो डायोड रखा है, ये डायोड क्यों रखा है? क्योंकि कभी कभी जब आउटपुट 0 होना चाहिए, Q3 is off, है ना? Even when it is off, see it is NPN transistor, right? So even if it is off, there are some carriers which move. There are some carriers which are constantly moving. So there might be slight voltage over here. वो slight voltage भी मुझे नहीं चाहिए. मुझे logic 0 मतलब पूरा logic 0 होना चाहिए. So to avoid that, we are using a diode. So the diode completely reverse biases it and you get full logic 0 at the output. ओके, समझ में आया? जहां जहां 0 0 है, आउटपुट पे 0 आएगा, आउटपुट पे 0 आएगा, वो ऑफ हो जाएगा. ठीक है, और ये क्लोज स्विच होगा, पूरा का पूरा आउटपुट पे आपको 5 वोल्ट मिल जाएगा. दैट इज लॉजिक 1. कहीं 1 1 रहेगा, कोई भी एक 0 रहा इनपुट, तो ये लॉजिक पूरा VCC पूरा आपको मिलेगा. दोनों अगर 1 है तो ये भी ऑन होगा, ये भी ऑन होगा, लेकिन ये बेचारा ऑफ हो जाएगा. इट एक्ट एज एन ओपन स्विच. पूरा VCC ऊपर से नीचे आने का रास्ता ही नहीं है उसको, आपको आउटपुट 0 मिलेगा. फाइन. अब अगर मैंने ये सेटअप निकाल दिया, इफ आई टेक दिस एंटायर सेटअप ऑफ, ओके, I'll mark it with red. This entire setup अगर मैंने निकाल दिया, then it is a system without totem pole. ठीक है, without totem pole हो जाता है वो. It is known as open collector. Collector open रहेगा. Okay, now there is a problem with that. स्पीड बहुत कम हो जाता है इसका. ऑब्वियसली इन एनी डिजिटल सर्किट स्पीड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? स्पीड, गेन, ऑल दीज थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. अगर टोटेम पोल नहीं है, इफ इट्स एन ओपन कलेक्टर अरेंजमेंट, द स्पीड, द स्विचिंग स्पीड इज गेटिंग अफेक्टेड, एंड दैट इज व्हाई वी आर यूजिंग दिस टोटेम पोल. सो आई एम गोइंग टू शो यू हाउ इट लुक्स विदाउट द टोटेम पोल. ओके, सो दिस इज अ NAND गेट विदाउट द टोटेम पोल. आपको दिख रहा है क्या यहाँ पे वो रेजिस्टर और एक और ट्रांजिस्टर दिख रहा है क्या आपको? नहीं है यहाँ पे. It is open collector, therefore this is known as an open collector NAND gate. Using transistor, TTL logic ही है, no doubt, but there is no totem pole. Okay, there is no transistor diode transistor connection over here. Okay, so now even if you start looking at the operation over here, operation is same, but the problem is again this ये IC जब आप खरीदोगे without open collector वाला IC, आपको IC के अंदर ये वाला arrangement दिखेगा, but while making it work, during the working, you will have to add a pull-up resistor to this. So because it has an open collector, it will not work until and unless there is a pull-up resistor. So you generally need to attach a pull-up resistor over here. Okay, एक pull-up resistor लगाना ही पड़ता है यहाँ पे. Okay, now all the open collector sorry, outputs of all open collector gates can be wired together, common pull-up resistors, and it can be used as a wired OR also.
ठीक है, बट जस्ट एज ऑफ नाउ जस्ट रिमेंबर कि दिस इज विदाउट टोटेम पोल. टोटेम पोल क्या है? ट्रांजिस्टर डायोड. डायोड का ही दिख रहा है क्या? नहीं, जो पहले वाले स्लाइड में मैंने दिखाया दैट इज अ टोटेम पोल अरेंजमेंट, है ना? दैट इज लाइक अ टोटेम पोल अरेंजमेंट. Just show this to you. This one, this is the totem pole arrangement, transistor diode वाला सेटअप. वैसा सेटअप है क्या इसमें? नहीं है. So this is open collector. ये collector है ना ट्रांजिस्टर का. I hope you know the three terminals of a transistor. This is collector, this is base and this is emitter. So this is an open collector. But इसमें प्रॉब्लम क्या है? स्विचिंग स्पीड बहुत लो है. कोई भी डिजिटल डिवाइस हो, डू यू वांट अ डिजिटल डिवाइस व्हिच हैज अ वेरी गुड स्पीड और वेरी लेस स्पीड? Obviously आज के ज़माने anyhow we need devices that are very fast. Switching speed should be fast, so that is why we have used this setup, that is totem pole. Okay, but this is also there in your textbook, that is why I added it later, so that वो क्यों ऐड किया ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि स्विचिंग स्पीड इंप्रूव करने के लिए हमने टोटेम पोल लगाया है. ओके, और टोटेम पोल मतलब एक दूसरे का दुश्मन, एक चालू रहेगा तो दूसरा ऑन रहेगा. ठीक है. Now in this TTL NAND gate without totem pole, in your if you are using Kinnari publication, I know many of you all use that. That is why I'm telling you. In Kinnari publication, that is a TPS page number 37. There is a mistake. I want you to note that down, please. Page number 3.7. Page number 3.7. The transistor name they have given is wrong. They have marked it as Q3. It is not Q3, it is Q4. उन्होंने पूरा explanation Q4 के हिसाब से दिया है, but figure में Q3 है. You will definitely get confused. This is the mistake they have done. उन्होंने Q3 लिखा है. Please pause the video and make this change. ये transistor Q4 होना चाहिए. It is not Q3. Lower this thing. Don't look at this my setup, okay? If you're following, don't look at my setup. If you're following the textbook, follow the textbook. Fine. Textbook mein the lower one which they have given is wrong. It has to be Q4. Fine. Because that is how it is there in the textbook. Okay. Yeah. So that was one I wanted to tell you. Now we will go to the same TTL logic से हम अलग-अलग gates बना सकते हैं, and the other one is an inverter, TTL inverter. Okay, TTL inverter same thing. TTL inverter में हमको कितने inputs लाएंगे? Inverter मतलब कौन सा gate? NOT gate, right? NOT gate. I will just draw the equivalent over here. NOT gate कैसा दिखेगा? ऐसा दिखेगा, right? Okay, NOT gate, fine. Now in NOT gate, how many inputs? A single input, single output. So we just need one input and you get output over here. क्या है इसका ट्रुथ टेबल? क्या होना चाहिए? अगर मैंने 0 दिया तो 1 मिलना चाहिए, 1 दिया तो 0 मिलना चाहिए. Am I right? So that is why we are not using multiple emitter configuration, क्योंकि हमें चाहिए ही नहीं, एक ही इनपुट चाहिए, तो मैं वो ये A जो इनपुट है वो मैं यहाँ दूंगी. ठीक है, fine. Now let us see the this thing working. If A is equal to 0, okay, obviously you will get low output over here. If A is equal to 0, again you will get 0 here. इसके बेस पे 0 गया मतलब ये तो ऑफ हो गया. बेस में आ रहा है मतलब वो कट ऑफ में चला जाएगा, राइट? इनपुट पे आ रहा है, it will not work, it is in the cutoff region. Cutoff region मतलब it will not work, it will act as an open switch. So this acts as an emitter follower. Emitter follower मतलब emitter follower. मुझे जो इनपुट मिला मैं वैसा फॉलो करूंगी. मुझे 0 मिला है यहाँ पे तो मैं 0 यहाँ पे फॉलो करूंगी. तो यहाँ पे भी 0 हो गया, तो यहाँ ये वायर यहाँ से कनेक्टेड है तो यहाँ पे भी 0 हो गया, इसको भी 0 मिल गया, मतलब ये भी कट ऑफ पोजिशन में है. That means open switch. So if this is again a totem pole transistor, a diode transistor, totem pole है, ये ऑफ होगा तो ये ऑन हो जाएगा. ऑन होगा, क्लोज स्विच है, पूरा का पूरा हाई लॉजिक आपको आउटपुट पे मिलेगा. That means y is equal to 1. Okay, that is exactly what we wanted. And reverse case में again if this is 1, you will get logic high logic voltage over here, that is 5 volts over here. ये ऑन हो जाएगा. ये इमिटर फॉलोअर है, ये पूरा लॉजिक हाई यहाँ पे देगा, हाई वोल्टेज दैट इज 5 वोल्ट्स. ये भी ऑन हो जाएगा. ये ऑन होगा तो ये ओपन स्विच जैसे एक्ट करेगा. दिस इज टोटेम पोल.
तो ये 5 वोल्ट को जाने का रास्ता नहीं मिलेगा. दैट इज वाई y is equal to 0. This is an inverter. Okay, same logic is applicable for TTL NOR gate as well. NOR gate, same logic. Again, you can see a totem pole. Yes. Okay, so the next one is NOR gate. NOR gate का कैसा है? It is two input NOR gate. We are seeing NOR is not of OR gate, right? It looks something like this. We have two inputs A, B, and Y. Again, there is a totem pole connection over here as well. This is the totem pole connection, but there is slight difference over here in the transistor setup. Okay, so what is the equivalent logic diagram for Y? It is not of OR gate. That means addition. OR का OR मतलब addition है ना? उसका not मतलब bar. A plus B bar. So let us see the first condition 0 0 when A and B both are 0. When this is 0, this is 0. ये saturate हो जाता है और ये देखो B कहाँ जा रहा है? B कहाँ जा रहा है? यहाँ पे Q5 पे. ये भी saturate हो जाता है. मतलब इधर 0 आया मतलब इधर भी 0 आएगा. ठीक है, ये देखो कहाँ जा रहा है, कहाँ जा रहा है, कहाँ जा रहा है, कहाँ जा रहा है, Q2 पे जा रहा है. मतलब Q2 भी कट ऑफ में चला जाएगा. ठीक है, Q2 विल बी ऑफ. ये भी 0 है, ये कहाँ जा रहा है, कहाँ जा रहा है, कहाँ जा रहा है, ये यहाँ जा रहा है. मतलब Q6 भी ऑफ हो जाएगा. तो ये देखो ये कहाँ पे जा रहा है, ये जा रहा है Q4 पे. ये ऑफ हो गया. एमिटर फॉलोअर है. एमिटर जहां ज्वाइन होता है वहीं देखना है. डू नॉट लुक, इट्स एन एमिटर फॉलोअर. तो एमिटर को कॉन्सेंट्रेट करो आप. एमिटर से कहाँ जा रहा है, कहाँ जा रहा है, कहाँ जा रहा है, यहाँ जा रहा है. ये ऑफ है तो यहाँ पे भी लो वोल्टेज रहेगा, ये भी ऑफ हो जाएगा. मतलब Q4 इज ऑफ. मैंने क्या बोला? दिस इज टोटेम पोल. ये दोनों उल्टा चलेंगे. Q3 और Q4 हमेशा उल्टा चलेंगे. This is off, that means this is on. If this is on, it gets a closed path और पूरा का पूरा logic 5 volts का पूरा मिल जाता है. Therefore y is equal to 1. We are getting 1. बराबर है क्या? 0 plus 0 is equal to 0 का बार मतलब 1. मतलब अपना आंसर क्या है? राइट है, मिल रहा है अपने को. Now, if any of the inputs are 1, कोई भी अगर input 1 रहे, ठीक है? Let me just erase it. If any of the input is 1, output will be 0. That is the speciality of this thing, no? NOR gate. So if any of the input is 1, you will get 0. Let us see. I will just take one example. It is same for everything. ठीक है? I will take 0 1 combination. 0 1 combination ये 0 है, ये saturate हो गया, ये यहाँ पे 0 आ गया, ये जा रहा है, यहाँ पे आ गया. मतलब Q2 को उसने बंद कर दिया. This is off. ठीक है? Okay, कोई बात नहीं. B is 1. It is going over here. Now when B is equal to 1, you get high logic over here, right? You get high logic over here. This is on, right? And this is on. It is emitter follower. Follow the emitter. Emitter is connected to Q4. मतलब इधर भी high logic आएगा. मतलब ये on है. अगर ये on है तो ये off है. Open switch हो गया. मतलब ये जाएगा क्या पूरा 5 वोल्ट नीचे? नहीं, उसको रास्ता मिल ही नहीं रहा है. Therefore, y is equal to 0. Let us check using the formula. 0 plus 1 is 1 का bar, that is 0. That means we are right. समझ में आया? So any input is 1. If any input is 1 or both the inputs are 1, it is somehow connected to the base of Q4. अगर Q2 भी चालू होता है तो वो भी इधर के बेस को connected है ना? I will take one more example if you want. We can check one more example. ये erase कर देते हैं सब कुछ. We will take one more example. चलो, suppose that both the inputs are 1. ठीक है, both the inputs are 1 1 1 1 मतलब ये इधर logic 1 आ गया, ये सीधा जा रहा है, मतलब Q2 पे भी logic 1 हो गया. That means this is turned on. Okay, इधर 1 है, that means इधर भी logic 1 आ गया. This is on. दोनों emitter follower है, मतलब ये on हो गया, ये on है, मतलब ये off है. There is no path. It acts as an open switch, so output is 0. So in 1 plus 1 is 1 ka bar, that is 0. So we are right.
any input 1 because दोनों के emitter इसके base पे connected है, कोई भी input 1 रहे, you will get output as 0. This is TTL logic. So in the next class, we are going to be learning about the last one, that is tri-state. Okay, tri-state logic, the concept of tri-state logic, and we will end the chapter in the next video. Fine. Please feel free to put your doubts in the comment section and I'll be happy to answer them. Thank you and have a great day.